पंचमुख हनुमत्कवचम श्रीगणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री पंचवदनायाञ्जनेयाय नमः। श्री पार्वती उवाच सदाशिववरस्वामिन् ज्ञानदप्रियकारकः कवचादिमया सर्वं देवानां संश्रुतं प्रिय इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं करुणानिधे वायुसूनोर्वरं येन नान्यदन्वेषितं भवेत् साधकानां च सर्वस्वं हनुमत्प्रीतिवर्धनम्। श्रीशिव उवाच देवेशि दीर्घनयने दीक्षादीप्तकलेवरे मां पृच्छसि वरारोहे न कस्यापि मयोदितं कथं वाच्यं हनुमतः कवचं कल्पपादपम्। स्त्रीरूपा त्वमिदं नानाकूटमण्डितविग्रहं गह्वरं गुरुगम्यं च यत्र कुत्र वदिष्यसि तेन प्रत्युत पापानि जायन्ते गजगामिनि अत एव महेशानि नो वाच्यं कवचं प्रिये। श्रीपार्वती उवाच वदनान्यस्य वचो नेदं नादेयं जगति तले स्वं वदान्यावधि प्राणनाथो मे प्रियकृत् सदा मह्यं च किं न दत्तं ते तदिदानीं विदाम्यहम् गणपं शाक्तशौरे च शैवं वैष्णवमुत्तमं मन्त्रयन्त्रादिजालं हि मह्यं सामान्यतस्त्वया दत्तं विशेषतो यद्यत्तत्सर्वं कथयामि ते। श्रीरामतारको मन्त्रः कोदण्डस्यामि मे प्रियः नृहरेः सामराजो हि कालिकाद्याः प्रियं वद दशा विद्याविशेषेण षोडशी मन्त्रनायिकाः दक्षिणामूर्तिसङ्गोऽन्यो मन्त्रराजो धरापते सहस्रार्जुन कस्यापि मन्त्रायन्ये हनुमतः ये ते ह्यदेया देवेश तेऽपि मह्यं समर्पिताः किं बहुक्तेन गिरिश प्रेमयान्त्रितचेतसा अर्धाङ्गमपि मह्यं ते दत्तं किं ते वदाम्यहम् स्त्रीरूपं मम जीवेश पूर्वं तु न विचारितं। श्रीशिव उवाच सत्यं सत्यं वरारोहे सर्वं दत्तं मया तव परं तु गिरिजे तुभ्यं कथ्यते शृणु साम्प्रतं कलौ पाखण्डबहुला नानावेशधरा नराः ज्ञानहीना लुब्धकाश्च वर्णाश्रमबहिष्कृताः वैष्णवत्वेन विख्याताः शैवत्वेन वरानन शाक्तत्वेन च देवेशि शौरत्वेनेतरे जनाः गाणपत्वेन गिरिजे शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः गुरुत्वेन समाख्याता विचरिष्यन्ति भूतले ते शिष्यसङ्ग्रहं कर्तुर्मुद्युक्ता यत्र कुत्राचित् मन्त्राद्युच्चारणे तेषां नास्ति सामर्थ्यमम्बिके तच्छिष्याणां च गिरिजे तथापि जगति तले पठन्ति पाठयिष्यति विप्रद्वेषपराः सदा द्विजद्वेषपराणां हि नरके पतनं ध्रुवं प्रकृतं वच्मि गिरिजे यन्मया पूर्वमीरितं नानारूपमिदं नानाकूटमण्डितविग्रहं तत्रोत्तरं महेशाने शृणु यत्नेन साम्प्रतं तुभ्यं मया यदा देवी वक्तव्यं कवचं शुभं नानाकूटमयं पश्चात् त्वयापि प्रेमतः प्रियं वक्तव्यं कत्रचित्तत्तु भुवने विचरिष्यति विश्वान्तः पातिनां भद्रे यदि पुण्यवतां सतां सत्सम्प्रदायशुद्धानां दीक्षामन्त्रवतां प्रिये ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्या विशेषेण वरानने उच्चारणे समर्थानां शास्त्रनिष्ठावतां सदा हस्तागतं भवेद्भद्रे तदा ते पुण्यमुत्तमम् अन्यथा शूद्रजातीनां पूर्वोक्तानां महेश्वरी मुखशुद्धिविहीनानां दम्भिकानां सुरेश्वरी यदा हस्तगतं तत्स्यात् तदा पापं महत्तव तस्माद्विचार्य देवेशि ह्यधिकारिणमम्बिके वक्तव्यं नात्र सन्देहो ह्यन्यथा निरयं व्रजेत् किं कर्तव्यं मया तुभ्यमुच्यते प्रेमतः प्रिये त्वयापीदं विशेषेण गोपनीयं स्वयोनिवत्। ॐ श्रीपञ्चवदनायाञ्जनेयाय नमः। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखहनुमत्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पंचमुख विराट हनुमान देवता
ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दष्ट्राकरालवदनं भ्रकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं शौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघानशरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोत्तरमुखायादिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखहनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पञ्चमुखवीरहनुमान् देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अञ्जनासुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत। ॐ अञ्जनासुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ अग्निगर्भाय नामिकाभ्यां नमः। ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ पञ्चमुखहनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ अञ्जनासुताय हृदयाय नमः। ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ॐ रामदूताय नेतत्राय वौषट्। ॐ पञ्चमुखहनुमते अस्त्राय फट्। पञ्चमुखहनुमते स्वाहा। ध्यानम् वन्दे वानरनारसिंहखग्राट् क्रोडास्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरशिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलं कट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं शर्वारिवीरापहम्। ॐ श्रीरामदूतायाञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय
सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीविताङ्गद महाकपिसैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहितरामवरप्रदाय षट्प्रयोगागमपञ्चमुखवीरहनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बं 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 वौषट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 आकर्षित सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धं 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा। ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीरहनुमते परयन्त्रपरतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ कं खं गं घं घं चं छं झं झं यं टं ठं डं ढं डं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं लं क्षं स्वाहा। ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुखहनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुखहनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पञ्चमुखहनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पञ्चमुखहनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अञ्जनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीरप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पञ्चमुखवीरहनुमते स्वाहा। भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अन्यन्तरिक्षग्रह परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकलप्रयोजन निर्वाहकाय पञ्चमुखवीरहनुमते श्रीरामचन्द्रवरप्रसादाय जं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेति स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यमिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवापुनुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्याधिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। श्रीगणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीपञ्चवदनायाञ्जनेयाय नमः। श्रीपार्वत्युवाच सदाशिववरस्वामिन् ज्ञानदप्रियकारकः कवचादिमया सर्वं देवानां संश्रुतं प्रिय इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं करुणानिधे वायुसूनोर्वरं येन नान्यदन्वेषितं भवेत् साधकानां च सर्वस्वं हनुमत्प्रीतिवर्धनं। श्रीशिव उवाच देवेशि दीर्घनयने दीक्षादीप्तकलेवरे मां पृच्छसि वरारोहे न कस्यापि मयोदितं कथं वाच्यं हनुमतः कवचं कल्पपादपं स्त्रीरूपा त्वमिदं नानाकूटमण्डितविग्रहं गह्वरं गुरुगम्यं च यत्र कुत्र वदिष्यसि तेन प्रत्युत पापानि जायन्ते गजगामिनि
अत एव महेशानि नो वाच्यं कवचं प्रिये। श्रीपार्वत्युवाच वदनान्यस्य वचो नेदं नादेयं जगति तले। स्वं वदान्यावधि प्राणनाथो मे प्रियकृत् सदा। मह्यं च किं न दत्तं ते तदिदानीं विदाम्यहम्। गणपं शाक्तशौरे च शैवं वैष्णवमुत्तमम्। मन्त्रयन्त्रादिजालं हि मह्यं सामान्यतस्त्वया। दत्तं विशेषतो यद्यत्तत्सर्वं कथयामि ते। श्रीरामतारको मन्त्रः कोदण्डस्यामि मे प्रियः। नृहरेः सामराजो हि कालिकाद्याः प्रियं वद। दशाविद्याविशेषेण षोडशी मन्त्रनायिकाः। दक्षिणामूर्तिसङ्गोऽन्यो मन्त्रराजो धरापते। सहस्रार्जुनकस्यापि मन्त्रायेऽन्ये हनूमतः। ये ते ह्यदेया देवेश तेऽपि मह्यं समर्पिताः। किं बहुक्तेन गिरिश प्रेमयान्त्रितचेतसा। अर्धाङ्गमपि मह्यं ते दत्तं किं ते वदाम्यहम्। स्त्रीरूपं मम जीवेश पूर्वं तु न विचारितं। श्रीशिव उवाच सत्यं सत्यं वरारोहे सर्वं दत्तं मया तव। परं तु गिरिजे तुभ्यं कथ्यते शृणु साम्प्रतं। कलौ पाखण्डबहुला नानावेशधरा नराः। ज्ञानहीना लुब्धकाश्च वर्णाश्रमबहिष्कृताः। वैष्णवत्वेन विख्याताः शैवत्वेन वरानन। शाक्तत्वेन च देवेशि शौरत्वेनेतरे जनाः। गाणपत्वेन गिरिजे शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः। गुरुत्वेन समाख्याता विचरिष्यन्ति भूतले। ते शिष्यसङ्ग्रहं कर्तुर्मुद्युक्ता यत्र कुत्राचित्। मन्त्राद्युच्चारणे तेषां नास्ति सामर्थ्यमम्बिके। तच्छिष्याणां च गिरिजे तथापि जगति तले। पठन्ति पाठयिष्यति विप्रद्वेषपराः सदा। द्विजद्वेषपराणां हि नरके पतनं ध्रुवम्। प्रकृतं वच्मि गिरिजे यन्मया पूर्वमीरितं। नानारूपमिदं नानाकूटमण्डितविग्रहं। तत्रोत्तरं महेशाने शृणु यत्नेन साम्प्रतं। तुभ्यं मया यदा देवी वक्तव्यं कवचं शुभं। नानाकूटमयं पश्चात् त्वयापि प्रेमतः प्रियं। वक्तव्यं कत्रचित्तत्तु भुवने विचरिष्यति। विश्वान्तः पातिनां भद्रे यदि पुण्यवतां सतां। सत्सम्प्रदायशुद्धानां दीक्षामन्त्रवतां प्रिये। ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्या विशेषेण वरानने। उच्चारणे समर्थानां शास्त्रनिष्ठावतां सदा। हस्तागतं भवेद्भद्रे तदा ते पुण्यमुत्तमम्। अन्यथा शूद्रजातीनां पूर्वोक्तानां महेश्वरी। मुखशुद्धिविहीनानां दम्भिकानां सुरेश्वरी। यदा हस्तगतं तत्स्यात् तदा पापं महत्तव। तस्माद्विचार्य देवेशि ह्यधिकारिणमम्बिके। वक्तव्यं नात्र सन्देहो ह्यन्यथा निरयं व्रजेत्। किं कर्तव्यं मया तुभ्यमुच्यते प्रेमतः प्रिये। त्वयापीदं विशेषेण गोपनीयं स्वयोनिवत्। ॐ श्रीपञ्चवदनायाञ्जनेयाय नमः। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखहनुमत्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः। पञ्चमुखविराट् हनुमान् देवता। ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी। यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं। बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं। दष्ट्राकरालवदनं भ्रकुटीकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम्। अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं। पश्चिमं गानुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं। शर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम्। उत्तरं शौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं। पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम्। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं। येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यं महासुरं। जघानशरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं। ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं।
खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोत्तरमुखायादिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखहनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्रऋषिः अनुष्टुप्छन्दः पञ्चमुखवीरहनुमान् देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अञ्जनासुत इति कीलकं श्रीरामदूतहनुमत्प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत। ॐ अञ्जनासुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ अग्निगर्भाय नामिकाभ्यां नमः। ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ पञ्चमुखहनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ अञ्जनासुताय हृदयाय नमः। ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ॐ रामदूताय नेतत्राय वौषट्। ॐ पञ्चमुखहनुमते अस्त्राय फट्। पञ्चमुखहनुमते स्वाहा। ध्यानम् वन्दे वानरनारसिंहखग्राट् क्रोडास्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरशिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलं कट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं शर्वारिवीरापहम्। ॐ श्रीरामदूतायाञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनामितविक्रमाय शौर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीविताङ्गदलक्ष्मण महाकपिसैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहितरामवरप्रदाय षट्प्रयोगागमपञ्चमुखवीरहनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बं 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 वौषट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 आकर्षित सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धं 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा। ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीरहनुमते परयन्त्रपरतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा।
ॐ कं खं गं घं घं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं डं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं सं शं हं लं क्षं स्वाहा। ॐ पूर्वकपिमुखाय पंचमुख हनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पंचमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पंचमुख हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पंचमुख हनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीरप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पंचमुखवीरहनुमते स्वाहा। भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अन्यंतरिक्षग्रह परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकलप्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुखवीर हनुमते श्रीरामचंद्रवरप्रसादाय जं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेति स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पंचवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यमिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवापुनुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्याधिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। श्रीगणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री पंचवदनायाञ्जनेयाय नमः। श्री पार्वती उवाच सदाशिववरस्वामिन् ज्ञानदप्रियकारकः कवचादिमया सर्वं देवानां संश्रुतं प्रिय इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं करुणानिधे वायुसूनोर्वरं येन नान्यदन्वेषितं भवेत् साधकानां च सर्वस्वं हनुमत्प्रीतिवर्धनं। श्रीशिव उवाच देवेशि दीर्घनयने दीक्षादीप्तकलेवरे मां पृच्छसि वरारोहे न कस्यापि मयोदितं कथं वाच्यं हनुमतः कवचं कल्पपादपं स्त्रीरूपा त्वमिदं नानाकूटमण्डितविग्रहं गह्वरं गुरुगम्यं च यत्र कुत्र वदिष्यसि तेन प्रत्युत पापानि जायन्ते गजगामिनि अत एव महेशानि नो वाच्यं कवचं प्रिये। श्रीपार्वती उवाच वदनान्यस्य वचो नेदं नादेयं जगति तले स्वं वदान्यावधि प्राणनाथो मे प्रियकृत् सदा मह्यं च किं न दत्तं ते तदिदानीं विदाम्यहं गणपं शाक्तशौरे च शैवं वैष्णवमुत्तमं मन्त्रयन्त्रादिजालं हि मह्यं सामान्यतस्त्वया दत्तं विशेषतो यद्यत्तत्सर्वं कथयामि ते। श्रीरामतारको मन्त्रः कोदण्डस्यामि मे प्रियः नृहरेः सामराजो हि कालिकाद्याः प्रियं वद दशाविद्याविशेषेण षोडशी मन्त्रनायिकाः दक्षिणामूर्तिसङ्गोऽन्यो मन्त्रराजो धरापते सहस्रार्जुनकस्यापि मन्त्रायेऽन्ये हनूमतः ये ते ह्यदेया देवेश तेऽपि मह्यं समर्पिताः किं बहुक्तेन गिरिश प्रेमयान्त्रितचेतसा अर्धाङ्गमपि मह्यं ते दत्तं किं ते वदाम्यहं
स्त्रीरूपं मम जीवेश पूर्वं तु न विचारितं। श्रीशिव उवाच सत्यं सत्यं वरारोहे सर्वं दत्त्वं मया तव। परं तु गिरिजे तुभ्यं कथ्यते शृणु साम्प्रतं। कलौ पाखण्डबहुला नानावेशधरा नराः ज्ञानहीना लुब्धकाश्च वर्णाश्रमबहिष्कृताः वैष्णवत्वेन विख्याताः शैवत्वेन वरानन शाक्तत्वेन च देवेशि शौरत्वेनेतरे जनाः गाणपत्वेन गिरिजे शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः गुरुत्वेन समाख्याता विचरिष्यन्ति भूतले ते शिष्यसङ्ग्रहं कर्तुर्मुद्युक्ता यत्र कुत्राचित् मन्त्राद्युच्चारणे तेषां नास्ति सामर्थ्यमम्बिके तच्छिष्याणां च गिरिजे तथापि जगति तले पठन्ति पाठयिष्यति विप्रद्वेषपराः सदा द्विजद्वेषपराणां हि नरके पतनं ध्रुवम् प्रकृतं वच्मि गिरिजे यन्मया पूर्वमीरितं नानारूपमिदं नानाकूटमण्डितविग्रहं तत्रोत्तरं महेशाने शृणु यत्नेन साम्प्रतं तुभ्यं मया यदा देवी वक्तव्यं कवचं शुभं नानाकूटमयं पश्चात् त्वयापि प्रेमतः प्रियं वक्तव्यं कत्रचित्तत्तु भुवने विचरिष्यति विश्वान्तः पातिनां भद्रे यदि पुण्यवतां सतां सत्सम्प्रदायशुद्धानां दीक्षामन्त्रवतां प्रिये ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्या विशेषेण वरानने उच्चारणे समर्थानां शास्त्रनिष्ठावतां सदा हस्तागतं भवेद्भद्रे तदा ते पुण्यमुत्तमम् अन्यथा शूद्रजातीनां पूर्वोक्तानां महेश्वरी मुखशुद्धिविहीनानां दम्भिकानां सुरेश्वरी यदा हस्तगतं तत्स्यात् तदा पापं महत्तव तस्माद्विचार्य देवेशि ह्यधिकारिणमम्बिके वक्तव्यं नात्र सन्देहो ह्यन्यथा निरयं व्रजेत् किं कर्तव्यं मया तुभ्यमुच्यते प्रेमतः प्रिये त्वयापीदं विशेषेण गोपनीयं स्वयोनिवत् ॐ श्रीपञ्चवदनायाञ्जनेयाय नमः। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखहनुमत्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पञ्चमुखविराट् हनुमान् देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दष्ट्राकरालवदनं भ्रकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गानुणं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं शर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं शौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यं महासुरं जघानशरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा।
ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनायोत्तरमुखायादिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनायोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखहनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पंचमुखवीरहनुमान् देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अंजनासुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत। ॐ अंजनासुताय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ अग्निगर्भाय नामिकाभ्यां नमः। ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ पंचमुखहनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ अंजनासुताय हृदयाय नमः। ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ॐ रामदूताय नेतत्राय वौषट्। ॐ पंचमुखहनुमते अस्त्राय फट्। पंचमुखहनुमते स्वाहा। ध्यानम्। वन्दे वानरनारसिंहखग्राट् क्रोडास्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरशिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलं कट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं शर्वारिवीरापहम्। ॐ श्रीरामदूतायाञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनामितविक्रमाय शौर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय संजीविनी संजीविताङ्गदलक्ष्मण महाकपिसैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहितरामवरप्रदाय षट्प्रयोगागमपञ्चमुखवीरहनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बं 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 वौषट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 आकर्षित सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धं 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा। ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखवीरहनुमते परयन्त्रपरतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ कं खं गं घं घं चं छं झं झं यं टं ठं डं ढं डं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं लं क्षं स्वाहा। ॐ पूर्वकपिमुखाय पंचमुखहनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पंचमुखहनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पंचमुखहनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पंचमुखहनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीरप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय
कामदाय पंचमुखवीरहनुमते स्वाहा भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अन्यंतरिक्षग्रह परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा शकलप्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुखवीरहनुमते श्रीरामचंद्रवरप्रसादाय जं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेति स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पंचवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यमिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवापुनुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्याधिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। श्रीगणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री पंचवदनायाञ्जनेयाय नमः। श्री पार्वती उवाच सदाशिववरस्वामिन् ज्ञानदप्रियकारकः कवचादिमया सर्वं देवानां संश्रुतं प्रिय इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं करुणानिधे वायुसूनोर्वरं येन नान्यदन्वेषितं भवेत् साधकानां च सर्वस्वं हनुमत्प्रीतिवर्धनं। श्रीशिव उवाच देवेशि दीर्घनयने दीक्षादीप्तकलेवरे मां पृच्छसि वरारोहे न कस्यापि मयोदितं कथं वाच्यं हनुमतः कवचं कल्पपादपं स्त्रीरूपा त्वमिदं नानाकूटमण्डितविग्रहं गह्वरं गुरुगम्यं च यत्र कुत्र वदिष्यसि तेन प्रत्युत पापानि जायन्ते गजगामिनि अत एव महेशानि नो वाच्यं कवचं प्रिये। श्रीपार्वती उवाच वदनान्यस्य वचो नेदं नादेयं जगति तले स्वं वदान्यावधि प्राणनाथो मे प्रियकृत् सदा मह्यं च किं न दत्तं ते तदिदानीं विदाम्यहम् गणपं शाक्तशौरे च शैवं वैष्णवमुत्तमं मन्त्रयन्त्रादिजालं हि मह्यं सामान्यतस्त्वया दत्तं विशेषतो यद्यत्तत्सर्वं कथयामि ते। श्रीरामतारको मन्त्रः कोदण्डस्यामि मे प्रियः नृहरेः सामराजो हि कालिकाद्याः प्रियं वद दशाविद्याविशेषेण षोडशी मन्त्रनायिकाः दक्षिणामूर्तिसङ्गोऽन्यो मन्त्रराजो धरापते सहस्रार्जुनकस्यापि मन्त्रायेऽन्ये हनुमतः ये ते ह्यदेया देवेश तेऽपि मह्यं समर्पिताः किं बहुक्तेन गिरिश प्रेमयान्त्रितचेतसा अर्धाङ्गमपि मह्यं ते दत्तं किं ते वदाम्यहं स्त्रीरूपं मम जीवेश पूर्वं तु न विचारितं। श्रीशिव उवाच सत्यं सत्यं वरारोहे सर्वं दत्तं मया तव परं तु गिरिजे तुभ्यं कथ्यते शृणु साम्प्रतं कलौ पाखण्डबहुला नानावेशधरा नराः ज्ञानहीना लुब्धकाश्च वर्णाश्रमबहिष्कृताः वैष्णवत्वेन विख्याताः शैवत्वेन वरानन शाक्तत्वेन च देवेशि शौरत्वेनेतरे जनाः गाणपत्वेन गिरिजे शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः गुरुत्वेन समाख्याता विचरिष्यन्ति भूतले ते शिष्यसङ्ग्रहं कर्तुर्मुद्युक्ता यत्र कुत्राचित् मन्त्राद्युच्चारणे तेषां नास्ति सामर्थ्यमम्बिके तच्छिष्याणां च गिरिजे तथापि जगति तले पठन्ति पाठयिष्यति विप्रद्वेषपराः सदा द्विजद्वेषपराणां हि नरके पतनं ध्रुवं प्रकृतं वच्मि गिरिजे यन्मया पूर्वमीरितं
नानारूपमिदं नानाकूटमण्डितविग्रहं तत्रोत्तरं महेशाने शृणुयत्नेन साम्प्रतं तुभ्यं मया यदा देवी वक्तव्यं कवचं शुभं नानाकूटमयं पश्चात् त्वयापि प्रेमतः प्रियं वक्तव्यं कत्रचित्तत्तु भुवने विचरिष्यति विश्वान्तः पातिनां भद्रे यदि पुण्यवतां सतां सत्सम्प्रदायशुद्धानां दीक्षामन्त्रवतां प्रिये ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्या विशेषेण वरानने उच्चारणे समर्थानां शास्त्रनिष्ठावतां सदा हस्तागतं भवेद्भद्रे तदा ते पुण्यमुत्तमम् अन्यथा शूद्रजातीनां पूर्वोक्तानां महेश्वरी मुखशुद्धिविहीनानां दम्भिकानां सुरेश्वरी यदा हस्तगतं तत्स्यात् तदा पापं महत्तव तस्माद्विचार्य देवेशि ह्यधिकारिणमम्बिके वक्तव्यं नात्र सन्देहो ह्यन्यथा निरयं व्रजेत् किं कर्तव्यं मया तुभ्यमुच्यते प्रेमतः प्रिये त्वयापीदं विशेषेण गोपनीयं स्वयोनिवत् ॐ श्रीपञ्चवदनायाञ्जनेयाय नमः। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखहनुमत्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पञ्चमुखविराट् हनुमान् देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दष्ट्राकरालवदनं भ्रकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गानुणं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं शौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यं महासुरं जघानशरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोत्तरमुखायादिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखहनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः पञ्चमुखवीरहनुमान् देवता हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अञ्जनासुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत।
ॐ अञ्जनासुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ अग्निगर्भाय नामिकाभ्यां नमः। ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ पञ्चमुखहनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ अञ्जनासुताय हृदयाय नमः। ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ॐ रामदूताय नेतत्राय वौषट्। ॐ पञ्चमुखहनुमते अस्त्राय फट्। पञ्चमुखहनुमते स्वाहा। ध्यानम्। वन्दे वानरनारसिंहखग्राट् क्रोडास्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलं कट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं शर्वारिवीरापहम्। ॐ श्रीरामदूतायाञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनामितविक्रमाय शौर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीविताङ्गदलक्ष्मण महाकपिसैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहितरामवरप्रदाय षट्प्रयोगागमपञ्चमुखवीरहनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बं 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 वौषट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 आकर्षित सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धं 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा। ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीरहनुमते परयन्त्रपरतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ कं खं गं घं घं चं छं झं झं यं टं ठं डं ढं डं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं लं क्षं स्वाहा। ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुखहनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुखहनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पञ्चमुखहनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पञ्चमुखहनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अञ्जनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीरप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पञ्चमुखवीरहनुमते स्वाहा। भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अन्यन्तरिक्षग्रह परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकलप्रयोजन निर्वाहकाय पञ्चमुखवीरहनुमते श्रीरामचन्द्रवरप्रसादाय जं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेति स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यमिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात्
10वारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्याधिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। श्रीगणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री पंचवदनायाञ्जनेयाय नमः। श्री पार्वती उवाच सदाशिववरस्वामिन् ज्ञानदप्रियकारकः कवचादिमया सर्वं देवानां संश्रुतं प्रिय इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं करुणानिधे वायुसूनोर्वरं येन नान्यदन्वेषितं भवेत् साधकानां च सर्वस्वं हनुमत्प्रीतिवर्धनं। श्रीशिव उवाच देवेशि दीर्घनयने दीक्षादीप्तकलेवरे मां पृच्छसि वरारोहे न कस्यापि मयोदितं कथं वाच्यं हनुमतः कवचं कल्पपादपं स्त्रीरूपा त्वमिदं नानाकूटमण्डितविग्रहं गह्वरं गुरुगम्यं च यत्र कुत्र वदिष्यसि तेन प्रत्युत पापानि जायन्ते गजगामिनि अत एव महेशानि नो वाच्यं कवचं प्रिये। श्रीपार्वती उवाच वदनान्यस्य वचो नेदं नादेयं जगति तले स्वं वदान्यावधि प्राणनाथो मे प्रियकृत् सदा मह्यं च किं न दत्तं ते तदिदानीं विदाम्यहं गणपं शाक्तशौरे च शैवं वैष्णवमुत्तमं मन्त्रयन्त्रादिजालं हि मह्यं सामान्यतस्त्वया दत्तं विशेषतो यद्यत्तत्सर्वं कथयामि ते। श्रीरामतारको मन्त्रः कोदण्डस्यामि मे प्रियः नृहरेः सामराजो हि कालिकाद्याः प्रियं वद दशाविद्याविशेषेण षोडशी मन्त्रनायिकाः दक्षिणामूर्तिसङ्गोऽन्यो मन्त्रराजो धरापते सहस्रार्जुनकस्यापि मन्त्रायेऽन्ये हनूमतः ये ते ह्यदेया देवेश तेऽपि मह्यं समर्पिताः किं बहुक्तेन गिरिश प्रेमयान्त्रितचेतसा अर्धाङ्गमपि मह्यं ते दत्तं किं ते वदाम्यहं स्त्रीरूपं मम जीवेश पूर्वं तु न विचारितं। श्रीशिव उवाच सत्यं सत्यं वरारोहे सर्वं दत्तं मया तव परं तु गिरिजे तुभ्यं कथ्यते शृणु साम्प्रतं कलौ पाखण्डबहुला नानावेशधरा नराः ज्ञानहीना लुब्धकाश्च वर्णाश्रमबहिष्कृताः वैष्णवत्वेन विख्याताः शैवत्वेन वरानन शाक्तत्वेन च देवेशि शौरत्वेनेतरे जनाः गाणपत्वेन गिरिजे शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः गुरुत्वेन समाख्याता विचरिष्यन्ति भूतले ते शिष्यसङ्ग्रहं कर्तुर्मुद्युक्ता यत्र कुत्राचित् मन्त्राद्युच्चारणे तेषां नास्ति सामर्थ्यमम्बिके तच्छिष्याणां च गिरिजे तथापि जगति तले पठन्ति पाठयिष्यति विप्रद्वेषपराः सदा द्विजद्वेषपराणां हि नरके पतनं ध्रुवं प्रकृतं वच्मि गिरिजे यन्मया पूर्वमीरितं नानारूपमिदं नानाकूटमण्डितविग्रहं तत्रोत्तरं महेशाने शृणु यत्नेन साम्प्रतं तुभ्यं मया यदा देवी वक्तव्यं कवचं शुभं नानाकूटमयं पश्चात् त्वयापि प्रेमतः प्रियं वक्तव्यं कत्रचित्तत्तु भुवने विचरिष्यति विश्वान्तः पातिनां भद्रे यदि पुण्यवतां सतां सत्सम्प्रदायशुद्धानां दीक्षामन्त्रवतां प्रिये ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्या विशेषेण वरानने उच्चारणे समर्थानां शास्त्रनिष्ठावतां सदा हस्तागतं भवेद्भद्रे तदा ते पुण्यमुत्तमम् अन्यथा शूद्रजातीनां पूर्वोक्तानां महेश्वरी मुखशुद्धिविहीनानां दम्भिकानां सुरेश्वरी यदा हस्तगतं तत्स्यात् तदा पापं महत्तव तस्माद्विचार्य देवेशि ह्यधिकारिणमम्बिके वक्तव्यं नात्र सन्देहो ह्यन्यथा निरयं व्रजेत् किं कर्तव्यं मया तुभ्यमुच्यते प्रेमतः प्रिये
त्वयापीदं विशेषेण गोपनीयं स्वयोनिवत्। ॐ श्रीपञ्चवदनायाञ्जनेयाय नमः। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखहनुमत्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पञ्चमुखविराट् हनुमान् देवता। ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी। यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दष्ट्राकरालवदनं भ्रकुटीकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं। पश्चिमं गानुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम्। उत्तरं शौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम्। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यं महासुरं। जघानशरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं। खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं। भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं। प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं। सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले। यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोत्तरमुखायादिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पञ्चवदनायोर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा। ॐ अस्य श्रीपञ्चमुखहनुमन्मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पञ्चमुखवीरहनुमान् देवता। हनुमानिति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अञ्जनासुत इति कीलकं श्रीरामदूत हनुमत्प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत। ॐ अञ्जनासुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ अग्निगर्भाय नामिकाभ्यां नमः। ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ पञ्चमुखहनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ अञ्जनासुताय हृदयाय नमः। ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ॐ रामदूताय नेतत्राय वौषट्। ॐ पञ्चमुखहनुमते अस्त्राय फट्। पञ्चमुखहनुमते स्वाहा। ध्यानं वन्दे वानरनारसिंहखग्राट् क्रोडास्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा। हस्ताब्जैरशिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलं कट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं शर्वारिवीरापहम्।
ॐ श्रीरामदूतायाञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गलनयनामितविक्रमाय शौर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय सञ्जीविनी सञ्जीविताङ्गदलक्ष्मण महाकपिसैन्यप्राणदाय दशकण्ठविध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुनसखाय सीतासहितरामवरप्रदाय षट्प्रयोगागमपञ्चमुखवीरहनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय बं 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 वौषट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खें 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 आकर्षित सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय धं 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 शत्रुस्तम्भनाय स्वाहा। ॐ टं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखवीरहनुमते परयन्त्रपरतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। ॐ कं खं गं घं घं चं छं झं झं यं टं ठं डं ढं डं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं लं क्षं स्वाहा। ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुखहनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुखहनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पञ्चमुखहनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पञ्चमुखहनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अञ्जनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीरप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पञ्चमुखवीरहनुमते स्वाहा। भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अन्यन्तरिक्षग्रह परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकलप्रयोजन निर्वाहकाय पञ्चमुखवीरहनुमते श्रीरामचन्द्रवरप्रसादाय जं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेति स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यमिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्याधिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्।